Good morning, rather good afternoon. What do we study in our political theory? Right. Now, basically, political theory, I told you yesterday that what is the meaning of politics and all, and what do we study in the political theory. Today is the main topic. And we look around us. If we look around us, we see, we would see that lot of movements are there, right? ये हम पॉलिटिकल पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिकल थियोरी को क्यों पढ़ते हैं व्हाई वी स्टडी द मेन टॉपिक इज दिस सो वी इफ यू लुक अराउंड अस वी सी वुड बी मूवमेंट सबसे पहले क्या देखेंगे आसपास कि मूवमेंट क्या है देन डेवलपमेंट क्या है एंड चेंज क्या है मूवमेंट क्या है डेवलपमेंट क्या है चेंज क्या है देखिए मूवमेंट होगी तो डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होगी तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे So, but if we look deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided politics, policies. Ideas like democracy, freedom, or equality. For instance, different countries may try to protect such values by enshrining them in their constitutions, as in the case of America and Indian constitution. Right. So basically, if we want to save, we want to save our democracy first. और पीपल किसके लिए इंस्पायर करते हैं किसके लिए गाइडेड पॉलिसीज होती है गाइडेड पॉलिसीज होती है आइडियल्स होते हैं लाइक डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड इक्वालिटी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र लोकतंत्र फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर इंस्टांस different countries may try to protect such values means freedom डेमोक्रेसी और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिंसिपल में सिद्धांत होते हैं they try to protect such values by enshrining them in their constitution वो क्या करते हैं अपने constitutions में इन तीनों चीजों को लेके आते हैं for instance we in India and we in in democracy we have got the freedom we have got the equality और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल के अंदर भी डेमोक्रेसी फ्रीडम इक्वालिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है हर कोई फ्री है यहाँ पे एवरीवन इज फ्री हर के पास एक फंडामेंटल राइट है राइट और सब और उसके बाद उनके पास फ्रीडम की जब और एवरीबॉडी इज इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप प्रजातंत्र लोकतंत्र वेयर व्हेन ही विल बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज then he can go for the voting fine so these documents did not just emerge overnight एक दिन में नहीं बन गए ये सारे right are built they are built upon the ideas and principles debated almost since time of Kautilya, Aristotle, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Gandhi, B.R. Ambedkar, as far as back as the 5th century BC Plato, Aristotle discussed with their students ये जो आज एक ये सब चीजें जो प्रजातंत्र लोकतंत्र एक दिन में नहीं बन गई राइट जो ग्रीक के लोग थे बेसिकली एरिस्टोटल एंड प्लेटो they also used to discuss they also used to discuss with their students and Chanakya Kautilya they also discuss and whatever if I have not done anything in your book basically previous chapters what is politics के बाद जो नहीं किया that will be done by you only जो चैप्टर्स में जो पार्ट में रख देता हूँ ना वो आपके पढ़ने के लिए है सो दैट यू कैन डू वेल आप स्टडी कीजिए उनको राइट मेरे पढ़ाने के बाद आप उसको स्टडी कीजिए कुछ रह जाता है तो यू हैव टू डू इट सो माय टॉपिक इज गोइंग ऑन तो एक दिन के अंदर प्रजातंत्र लोकतंत्र ये डेमोक्रेसी और ये फ्रीडम ये इक्वालिटी एक दिन में नहीं बन गया थाउजेंड ईयर्स चले आ रहे हैं इसको यू नो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल ये अब्राहम लिंकन ने कहा था अमेरिका के अंदर उसको हमने 1950s में उसको एनश्राइन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये इट टेक्स हेल ऑफ द टाइम बहुत देर लग गई इनको इकट्ठा इनको आपको देने के अंदर आजादी आपको एक दिन में नहीं मिली फ्रीडम्स
एक दिन में आपका फ्रीडम एक दिन में नहीं मिली, बोलने की आजादी आपको एक दिन में नहीं मिली. Lots of people they sacrifice their whole life. Then you got this freedom. आज हम बोलते हैं ना जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा. These are nothing. They have got that brick head है, होता है ना जिनके पास समझ नहीं आता. They used to shout like this. आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता. लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, और कोई चीज फ्री नहीं है. ये आजादी आपको मिली है, फ्री नहीं मिली है. दैट्स व्हाई वी से इट दैट लॉट ऑफ पीपल दे हैव सैक्रिफाइस्ड देमसेल्व्स. Okay, these documents did not just emerge overnight. They are built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya and all. Right? Whether monarchy or democracy was better in modern times, Rousseau first argued for freedom as a fundamental right. Rousseau जो थे सबसे पहले fundamental right के लिए, fundamental right. Just think about what do you mean by fundamental right. Fundamental right means आपके मौलिक अधिकार. राइट ये मौलिक अधिकार आपके कोई भी अधिकार आपको एक दिन एक रात में नहीं मिल गया. राइट सो फंडामेंटल राइट इन रूसो ने सबसे पहले कहा था कि इंसान को आजादी मिलनी चाहिए, उसको कुछ अधिकार मिलने चाहिए. देन कार्ल मार्क्स फ्रॉम यूएसएसआर. कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म कहा जाता है, जिनकी मार्क्सिज्म की थ्योरी है. मार्क्सिज्म की थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स ने शुरू की थी. कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज अ क्रूशियल एज फ्रीडम. इक्वालिटी उतनी ही जरूरी है जितनी फ्रीडम जरूरी है. आपका बराबर का अधिकार भी बहुत जरूरी है जितना कि फ्रीडम जरूरी है. क्लोजर होम मिस्टर गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम ऑफ स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज, and Dr. Ambedkar vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority. ये जो है बेसिकली एक इंसान पूरे पूरे समाज के लिए लड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल दैट गांधी से then Mr. Ambedkar, they fought for the downtrodden people, and such must receive special protection. अम्बेडकर कहते थे कि इनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट को एक माइनॉरिटी घोषित किया जाए और इनको स्पेशल फ्रीडम भी मिले और स्पेशल प्रोटेक्शन मिले. And such must receive special protection. These ideas find their place in the Indian Constitution. और इन सब ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. These idea of freedom, idea of peace, idea of expression, idea of fundamental rights, they played a very vital role in Indian Constitution. Our preamble enshrines freedom and equality. The chapter on rights, freedom in हमारे preamble के अंदर भी in our preamble enshrines freedom and equality. Freedom, azadi, equality, barabar. We are all equal. The chapter on rights of the Indian Constitution abolishes untouchability. और untouchability को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया. Untouchability should not be there. So, in any form of Gandhian principle, find a place in directive principles. Right? तो ये हमारे directive principles के ऊपर accept किया गया है. Then next is political theory deals with the ideas and principles that shape constitutions. Political theory deals with the ideas and principles that shape constitution, governments, and social life. In a systematic manner, it clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy. It's a very important part. Freedom, you should have equality, justice, and democracy. Secularism, and so on. It proves the significance of
principles such as rule of law, separation of powers, judicial review and all, which I told you earlier also. So this was the part. So basically ये सब चीजों को लेकर इन सब चीजों को लेकर पॉलिटिकल थियरी बनाई जाती है. And there and just come down next part. This is done by examining the arguments advanced by different thinkers of difference of these concepts. Though Rousseau and Marx of Gandhi did not become a politician, the ideas influenced generation of politicians everywhere.